जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी को प्यार भरा नमस्ते। गुरु जी रब है, ईश्वर है। शुक्राना गुरु जी, आपने ये मौका दिया आपकी महिमा करने को। गुरु जी मैनी हैप्पी रिटर्न्स, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। पूरी दुनिया में गुरु जी का जन्मदिन बहुत जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, मनाया गया है। बड़े मंदिर ने तो इतना ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किया, इतनी संगत आई। शुक्राना बड़े मंदिर के मैनेजमेंट का, शुक्राना गौरव भैया का। गौरव जी हैज टेकन सच ब्यूटीफुल केयर। जिस तरीके से उन्होंने इतना बढ़िया बर्थडे सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज की। जब भी गुरु जी की महिमा, गुरु जी के तो हर पल शुक्राना शुक्राना ही रहते हैं। एंड गुरु जी संगत सत्संग तो आप ही करवाते हैं। एंड गुरु जी कहते सी ना, जो सत्संग करता है, जो सत्संग सुनते हैं, सारे दा कल्याण हो जाता है। ये मौके के लिए शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा गुरु जी। गुरु जी कहते सी साडी जर्नी विद हिम जन्मों की होती है। So I can't say that yes, I met him physically in 2005. So I think my journey had started जन्मों से हो रखी थी, and physically he met me in 2005. I can't say I met him because गुरुजी के दर पे, गुरुजी के मंदिर में तो एक पत्ता भी नहीं फटकता इनकी इजाजत के बिना। And जब गुरुजी चोले में थे तब कहते थे कि लाइना लग जाएंगी। There will be lines and lines of people. There will be so much of संगत जो गुरु जी के दर पे आएगी, बड़े मंदिर में आएगी ब्लेसिंग्स के लिए। एंड कल हम सब ने देखा the rush that was there after the pandemic, after the COVID. इतनी भीड़ थी जो it was literally beyond control. एंड आप सोचो जो इतनी मेहनत से लोग जब वहां आ रहे हैं ते उन्हां दे कोल ते कोई एक बार ते आएगा ऑन द फेस ऑफ समबडी, बट अगर कोई बार बार आ रहे हैं और इतनी तादाद पे लोग आ रहे हैं तो आप सोचो कितनी शक्ति है। और गुरुजी कहते थे बड़े मंदिर में 11 ज्योतियों की शक्ति है, जो कोई पास से भी निकल जाए उसका भी कल्याण हो जाए। एंड yesterday we saw that. शुक्राना गुरुजी फॉर एन अमेजिंग दर्शन दैट यू हैव गिवन अस। गुरुजी के और इतने द अरेंजमेंट्स दैट वर मेड, आई थिंक मस्ट हैव बीन फॉर लैक्स ऑफ पीपल। कल तो इतने लोग थे एंड शुक्र दैट सबको लंगर मिला। इतनी दूर दूर तक लंगर अरेंजमेंट्स करके रखी हुई थी गुरुजी ने। एंड जो अंदर जब इतनी भीड़ भी हो गई, लिटरली चौको ब्लॉक हो गया पूरा, फिर भी लोगों को बाहर से भी लंगर मिला, जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, सब कुछ मिला। इतने ब्यूटीफुली सब मिला। शुक्राना गुरुजी की, हम सबका इतनी देख रेख करी आपने एंड सबको ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी के लंगर में तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ इनके लंगर प्रसाद में है, सब कुछ। एंड गुरुजी के से जब हम कनेक्शन बनाते हैं, इट इज नॉट कोई इंज नहीं हैगा कि तुसी किसी दे थ्रू जाना है या कुछ नहीं। तुसी अपनी कनेक्शन गुरुजी दे स्वरूप विच गुरुजी आपे रहंदे ने। जद भी तुसी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ स्वरूप ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ अपनी ऐ नहीं हैगा कि कोई आप प्यार से जब भी गुरुजी के पास बैठोगे, गुरुजी से बात करोगे, उनके स्वरूप से बात करोगे, तो वो गुरुजी से ही बात कर रहे हो आप। एंड जब when Guruji was in Chola, तद तक everything practical। हुन जिन्नी जिद्दी श्रद्धा और ना ले जाए। It is हर मतलब कोई किसी नु कदे भी ए ना सोचना कि कोई गुरुजी यूज्ड टू ब्लेस पहले, बिकॉज कल थोड़ा से जैसे मतलब गुरुजी यूज्ड टू ब्लेस द रिच एंड द पुअर अलाइक। मैं एक छोटा जा एक्सपीरियंस इस वास्ते शेयर करना चाहनी हाँ। कल इन्नी गाड़ियां भी सी, लोग पैदल भी आ रहे सी, सब इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। एंड पीछे फर्स्ट आई जस्ट शेयर अ स्मॉल, इट्स इंपॉर्टेंट टू शेयर दिस। मैनू पीछे डेंगू हो गया सी ते आई वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल
and it was the, I think, second or third day when, and my blood counts had gone pretty bad, and it was the second or the third night जब गुरुजी ने मैनू दर्शन दिता. And जब when Guruji gives when you dream of Guruji, it is not महापुरुषों को ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਏ ਜਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ it is not a dream, ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ came and he showed a beautiful, बहुत सुंदर दृश्य दिखाया उन्होंने. बड़ा मंदिर दिखाया उन्होंने. बड़े मंदिर में ऊपर इतनी बड़ी, इतना बड़ा जो हमारा शिवलिंग है, गुरुजी ने वो दिखाया. And I was in a pretty bad shape when I was admitted in the hospital. And शिवलिंग के आसपास उन्होंने दिखाया पूरा घी प्रसाद है. And then the शिवलिंग just opened from the top. And जिस तरह शिवजी जी के जटाओं से गंगा तो गंगा बहती है, वहीं से ऐसे ऊपर से शिवलिंग खुला एंड पूरा नदी बह रही थी. This was all in the dream that he showed. And he said, Ritu aunty, amrit pee le. And Zangat ji, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, my hands were joined together, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਲ ਪੀਂਦੇ हैं, ਤੇ मैं ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ. And in that dream, जब मैं अमृत पी रही थी, ते गुरुजी कहते रितु आंटी, I bless, and इन्नी संगत सी ओ अमृत पी रही सी. And गुरुजी कहते, I bless the rich and the poor alike. And he told me this in the dream. They he never sees कि somebody is moneyed or somebody is not moneyed. No, he blesses the rich and the poor alike. And he said this exactly in these words to me. He told me that. And he said that when I was drinking the amrit, he said, thoda pee, pani kha raha hai, nahi to pet kharab ho jayega. And he gave me that amrit to drink, Sangat ji. And then he told me, as soon as amrit pee karke, all the blessings, Guruji ke jal prasad mein, langar prasad mein, like I said, health, wealth, happiness, relationships, sab kuch rakha hai. Next day when the doctors came, for the morning round, I think it was 9:30. They were a little taken aback, and they just said that they told me that my son was also there, and they said you can go back home now. It's all right. There's nothing to worry. So Guruji ने, आप सोचो संगत जी, अभी कोविड के टाइम में भी कितनी संगत को गुरुजी ने हम लोगों को फूलों की तरह रखा, कितना ब्लेस किया, कितना सबके साथ कनेक्शन बनाया, हर संगत के साथ इन आवर रिस्पेक्टिव हाउसेस, बिकॉज मंदिर वाज क्लोज्ड. ये तो अब इतने 2 साल के से ऊपर हो गया कि इतनी ब्यूटीफुली कल गौरव जी ने बर्थडे ऑर्गेनाइज कराया गुरुजी का, एंड लिटरली सारा दिल्ली वहीं पर आ रखा था. एंड इतना सोना लग गया कल. तो गुरुजी मतलब इतना ध्यान रखते हैं अपनी संगत का. मैं तो आपको भी बता रही हूँ, लाइक हाउ व्हाट हैपेंड विद मी, एंड इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, सो मेनी पीपल, सबके संगत. हम तो शुक्राना गुरुजी दैट यू हैव ब्लेस्ड अस ऑल. एंड इन्ना सारा सारे दा ध्यान रखा. इट इज अ मार्वल. जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी ਨੂੰ मिली सी, ते when my friend had taken me to Empire Estate, and there Guruji was sitting alti-palti on the sideboard, and I was just, and my friend, she took me there in the evening time. So that is and जब बाहर हम गाड़ी से उतरे तो लॉट ऑफ खुशबू, इतनी खुशबू सी गुलाबों दी, मतलब इतनी गुलाब. So I was just thinking, being an army officer's daughter, army officer's wife, and an army officer's daughter-in-law, we know, when the VIPs come, wo sara, we spread the canteen ka fragrance, roses and all that. So I was just thinking कि इन लोग ने तो इतना गुलाब
पूरा बाहर तक छिड़का हुआ है. And my friend, she took me in, and she said, she just, with her hand like that, she waved her hand and she said, meet my Guruji. So I just saw, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਚੋਲੇ ਚ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. And we never see, I had never seen a guru of this nature. And he was wearing drain pipes, and he had a floral shirt, half sleeve shirt, bush shirt he was wearing. And the mete, I was ekdam, I just thought in my mind that he's so young, and I was just wondering. And Shami Asiyo, I knew that I couldn't get over the fact. But Sangat ji, just when she said this, Guruji looked up. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਰ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ. I was so completely and totally taken aback, and I felt as if जिस तरह मेरा MRI भी हो गया, X-ray भी हो गया, that there is nothing that is being hidden by him. His after all, he is Mahadev. He has that the third eye, and he knew everything. And ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ as my journey moved on, I realized ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, because we had never seen Lord God in this, we had never seen or thought that God can be like this. And he is, but you see, Sangat ji, he is Rasak Vairagi Guru. His style was so different. He came as a human being to be with us, whom he has created, whom he has held hands with and taken us through the journey. And Sangat ji, and then he just, when he, after oh jeri uncomfortable na, mainu te goose pimples ho gayi ki jis tarah ki he knows every dirty secret of mine. mainu te inj lagya jad ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ he just gave ishara ki that I can go enter in. So we just went in and sat on the side, and ਬਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ. ਉਧਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹ was given. So I thought ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ, and it was about 7:45 ਵਜ ਰਹੇ ਸੀ. So I refused, and then my friend Olga, she said, this is prasad. I understood immediately, तो मैं पी लेती. And thale fauji style में little bit I left in the glass. Then she said, finish it. There, I finished it. Of course, much later I heard, when I heard, satsangs I heard, and I heard also, how Sharad Pawar onane cha prasad puri nahi piti si. How it is so important to have his prasad completely and totally. एक ग्राई खा लेनी चाहिए ते पी ले, ਉਹ ਤੇ ਪੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. That I learned as my journey moved along. So after that, Sangat ji, Guruji came there wearing beautiful robes. He was wearing such beautiful robes. I had never seen a man dressed, excepting when I was about 6 years of age. I had seen Gogia Pasha had come to my father's regiment, and Jad wearing, beautiful robes. So when I saw Guruji dressed up in those beautiful robes, तो मैं अपने मन में सिर्फ संगत जी सोचा that he is a world class magician. ये तो पूरी दुनिया को ही हिला देंगे. भी मेरे मन में सोच आया, because I had seen only one other man wearing such kind of robes, beautiful robes. And he wore those robes because he wanted us also to be beautiful and to enjoy life, because that's what life is meant for. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ फिर ओम नमः शिवाय बजन लग गया. Now with ओम नमः शिवाय तो मैं immediate connection हो गया, because I was just about 8-9 years of age जब मैं first time अमरनाथ गई थी. And I had trekked, gone walking to Amarnath, and I had become, I started fasting, doing Shivji ji ke vrat from the age of 13. The Om Namah Shivaya de naal te I connected immediately, Sangat ji. And ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ महाराज आके अपनी कुर्सी पे बैठे. And then जब खत्म हुआ, I was my friend, she introduced me to
Olga, she introduced me to Guruji and she said, Guruji, eh meri saheli hegi. And Guruji looked at me and said, na ki hai? मैं क्या रितु कहते रितु कौन मैं क्या रितु रितु कहते छेती बोल मैं क्या रितु सेठ डॉटर ऑफ कर्नल रोशन लाल वाइफ ऑफ कर्नल अशोक सेठ एंड कहते बच्चे मैं क्या एक लड़का है किथे है मैं क्या दुबई कहते मुंडे दा ब्याह कर ते ऐश कर this he told me there and then he just waved his hand and pointed out sent me odaro red cape paake Raghurai ji was sitting there and he sent me to have langar prasad there te kade is tarah beh ke te langar prasad kita hi nahi si so I was a little taken aback flummoxed ke assi kha kis tarah rahe ne idhar thalle beh ke चार log ek thali ch kha rahe ne te sangat ji that was his way of telling us I think he used to that was his amazing divine way of blessing us and giving us everything that we desired te udhar beh ke wo unhone Raghurai ji ne he gave roti prasad laddu prasad and matlab rab di tusi socho rab de kol beh ke rab sanu langar khwa rahe si nothing could be more celestial and more divine than that but little did we realize that a lot of us never realized कि ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ and after that langar prasad ke baad I just told my friend I said let's go because my husband was flying in Srinagar and he had called when we were leaving and said that he also never matlab assi guruan de is vele te jai nahi da nahi hai swere we are used to going to gurus early in the morning so when he had called at about 6:45 he asked me what's happening I said I'm going with Olga to her Guruji so he said koi time hai guruan de jaan da come back home fast so that tension had already started and I told my friend, let's go back home. She says, when you go to the chief's house, don't you go and thank him? That became another thing. So we went out, washed our hands, came back and stood in line to thank Guruji. Now everybody was doing Dandvat Pranam to Guruji. And when the person in front of me did the same, and I just thought in my mind, Sangat ji, and Guruji ke charan, itne sundar charan, unke charan aise, unke chole se bahar the, aur Sangat unke charanon ko pranam karke, छू करके, शुक्राना करके जा रही थी. Now that was my first meeting with him, and I never I was so taken aback कि किथे गई हैं. And then when it was my turn, I just thought, I said, he's so young, I'm not going to touch his feet. Sangat ji, we are such fools, we never realize where we are. And, matlab, it is because मैं तो कदे सोचा भी नहीं कि मैं रब दे सामने खलोती हूँ. Rab knows everything. Guruji knew as soon as when he had scanned me. I'll say scanned because actually it was a scan. When he looked at me, it was as if everything he has seen. So he knew what is going on in my mind. And Sangat ji, he just put his feet back under his robe. I was relieved also. I just standing, I bowed my head, joined my hands and said, thank you so much, and left from there. So Sangat ji, after my friend, she dropped me back. Then that night, Guruji came in my dream and asked me, he said, Ritu aunty, aapke bete ka naam Akhil Raj Seth hai? I told him, I said, ji haan. And this is a conversation, Sangat ji, that is happening after my first meeting with him. And he then gave a very special blessing for my son. And that is very personal, te wo main share nahi karangi. And then that was all in the dream, Sangat ji. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ. And it was completely and totally, and when I had been sitting over there, I had just thought in my mind that because my son had been wanting something, so I just thought that कि मेरे बेटे का ये काम हो जाए. If you got some power, ये हो जाना चाहिए. You know how we are, ifs and buts की, मैंने तो कुछ पता ही नहीं कि मैं आई भी किथे हैं.
ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੇ ਵਿਦ ਇਨ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਓਨਲੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ 12 ਸਵਾ 12 ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਖਿਲ ਰਾਜ ਸੇਠ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਟੇਕਨ ਅਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇਅਰ after that of course we had gone to Dubai, my husband and I, we spent a couple of, and it was at the back of my mind that I need to go and thank him. So after about 2 months or so I wanted to go back to him. I called up my friend again and she said somebody's coming from Chennai te tenu appe jana pauga. Then I went back on my own and I picked up my Maruti and drove down. And the same, then it was fall. And then this time when I went, I was standing in line and I wanted to touch his feet and thank him. His feet were under his robe. And Sangatji, he took out his feet and with such beautiful feet he had. Beautiful feet. And I just touched his feet with the tip of my fingers. I touched them with the tip of my fingers, fearing that his feet might get dirty, if I touch them any the more. Blessed were we that we were able to touch his feet like that. From next day onwards, that night when this happened, I didn't realize, but as to why the fragrance, or it didn't dawn on me, but I came back and after having freshened up for the night, I washed my hands with soap and all. And you know how we Fauji's are Synthol and Synthol is a soap that we are using or Lyril. And suddenly after I washed my hands and when I was going to sleep, the fragrance from my hands was full of roses. I didn't understand why this had happened. And next day onwards, मेरे घर च इन्नी गुलाब दी खुशबू, इन्नी प्यारी महक आ रखी पूरी, मैनू समझ ही नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है। ते my mother had come, she said मैं कॉफी पीने आ रही हूँ, मैं क्या आ जाओ। So जदों आए and she said ए की इन्ना बड़ा तू ओ रूम बड़ा फ्रेशनर पा के रखिया है पूरे घर च। मैं कहा मम्मी मैं तो कुछ भी नहीं पाया। she said ऐ भी झूठ बोल दी है, इन्ने सच स्ट्रॉन्ग स्मोक फ्रेग्रेंस है, रोजेस दी आ रही है, ए कोई इस तरह थोड़ी आ रही है। I kept quiet, की दसा मैं, and everyone coming into my house would say inni roses di khushboo, and I would just carry it, not understand ki khud ko bhi haath dhoo। I went, washed my hands again, naate tote Lyril naal te Synthol naal, aur fir gulab di khushboo, inni beautiful khushboo, it is something no perfume on earth can capture that fragrance। And after about 5 days I ring up my friend and because of मम्मी दूजी बार आ गई कॉफी पीने वास्ते, तो फिर आकर के कहती बड़ी खुशबू तू डाल रखी है। she was also a Fauji's wife and मैं क्या नहीं जी मैं तो कुछ भी नहीं किया। and then she was little irritated and I also then got little irritated, so rang up my friend and I said मेरे तो घर में इतनी खुशबू आ रही है ये since I have gone to your Guruji। Then she told me, she said, this is my Guru's way of blessing you। So Sangatji, this was so divine, it was so beautiful that I don't have no words। And honvi jad Guruji ne chola chhad deta hai, if one is in Scotland or if one is in New York or one is in any part of the world and one is बहुत जोर की हम गुरुजी को बोलते हैं कि अपनी presence, please let me feel your presence, let me feel that you are here right here with me। इतनी strong खुशबू आंदी है गुरुजी दी, ते it is the same खुशबू which जब उचोले सी then we used to get। It's beautiful and it is his way of ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, that fragrance is very different। it is something which like I said no perfume can capture। so Sangatji, in his बड़े मंदिर में गुरुजी के पास आकर के इतनी एक अलग, and it is not just me, all of us, we have our everything in our life has changed so beautifully कि in
इन्ना चेंजेस आ गए ने, इन्ना सब कुछ, एंड मतलब एंड वी डोंट नीड टू आस्क एनीवन टू प्रे फॉर अस। अच्छा पहले ना एक छोटी जी गल दसनी है ते आई यूज्ड टू पहले मेरे घर एक पंडित आंदा सी, रेगुलरली आंदा सी ते when Guruji took me into his charan, he then told me one day, and Guruji na de naal jad tusi like I said ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ you don't need any intermediary, and to each one एक छोटा सा मैं अभी देयर इज सो मच एक्चुअली टू टेल यू नो, बिकॉज एवरी पल, हर एक पल गुरुजी का ही सत्संग है, गुरुजी का ही ब्लेसिंग है हर सांस सांस में, every breath. So you know, it was like very recently, and we, each one of us has a different journey with him. We are never to think, and you know, like no size fits all ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੁਣਿਆ that ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਹਨੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਪੇੜ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡਾ ਛੱਤਾ ਸੀ ਤੇ my children and self, we kind of you know and the staff ਅਸੀਂ ਦੁਪੱਟੇ ਲਪੇਟ ਲੁਪਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਹਨੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਜੰਗਲੀ we took out the honey, we got lovely fresh honey, and honey ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਪਾ ਲਿੱਤੀ। ਹਨੀ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਹਫਤੇ 3 I think about 4 या 5 days में पाई होनी है, and फिर अखा तो लेती, but after about a week or so my eyes, they started troubling me and I got sty in my eye, and then I had to put medicine in my eyes for about 2 weeks, and this is just finished only now recently, you know. So no size fits all, हर एक दे साढ़े एक दा अलग अलग, चाहे मतलब ਅਸੀਂ ਤਾਂ मतलब we are not in lakhs, we are in crores now ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੈਗੇ ਤੇ डिवोटीज ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, you know, कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं मांगना। So I'll just, you know, when I had just lost my husband, my mother, my father and my father-in-law, सारे चले गए थे, मैं you know, I was I used to I would pray a lot, obviously कौन नहीं करेगा, and because we are all looking for, you know, a support system, and then Guruji gave me darshan। जो गुरुजी का बड़े मंदिर में जो राइट साइड में गुरुजी ने ब्लू चोला पाया है, उस स्वरूप विच गुरुजी came and gave me darshan, and he said, Ritu aunty, what do you want? ए गुरुजी दे exact word सी, he is asking me this in my dream। संगत जी गुरुजी कोलो कदे भी कुछ मंगीदा नहीं, say I couldn't, and imagine I was at that stage in my life when I had nothing, and I had lost everything, I had nothing, and my son was also not settled, kuch bhi nahi thi, and he came and gave me darshan and asked me, what do you want, Ritu aunty? Ritu aunty, no, his exact words were, Ritu aunty, what, not, he didn't even say Ritu aunty, he said, what do you want? Exactly like this, he said, what do you want? I just looked at him and I told him, I mean, I didn't telepathically, I spoke to him, telepathically I spoke to him, I couldn't utter, I was spellbound। मतलब रब आके दर्शन दे ते थोड़ी कुछ, मतलब आदमी कुछ बोल ही नहीं सकता, समझ ही नहीं आती कि हो की रहा है। तो मैं तो उन्होंने तरफ इंज वेख्या कि मतलब कि मैनू तो यह भी नहीं पता कि व्हाट आई शुड आस्क फॉर। मैं बोलूँ कि मुझे पैसे चाहिए, नहीं, हाँ मुझे चाहिए थे, पैसे भी चाहिए थे मुझे, यू नो, आई नीडेड अ प्रॉपर प्लेस टू स्टे, आई नीडेड सो मच, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई उन्होंने। एंड आई जस्ट लुक्ड एट हिम बिकॉज, एंड आई जस्ट टोल्ड हिम टेलीपैथिकली दैट, आई टोल्ड हिम, आई सेड गुरुजी, आई डोंट नो what is good for me, you know what is best for me। And Sangaji, this had happened about 10 years back, more than 10 years back. And when I looked at him and I said this, he just looked at me and then he
went away. This was all in the dream. And Sangat ji from then, but yes, मैं उनको मानती थी, मांगा नहीं माना मैंने. तो उन्होंने मतलब everything, he has left no void in my life. उन्होंने कुछ भी नहीं. मेरे को तुसी अज अगर पूछोगे की चाहिए तेनू ते मतलब रब मिल गया. एंड जद रब नाल होंदा है देन सारी जटो जहा की खुशियां नाल हो जांदियां ने, साथ चलदियां ने. रब नाल चलदा है जद. एंड that was around that same time. And you know, we are very blessed, we are truly blessed कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੜੀ ਹੈ. And it's such a big grace, Sangat ji. So you know, then once he gave me again around that time, my husband had been posted in Leh Ladakh, and he gave me darshan. And there's a huge mountain in the dream he showed. If Sangat ji, those of you who've been in Leh Ladakh, we were there posted for about 2.5 years. My husband was commanding 666 Aeropeace Squadron, and I was working in Kendriya Vidyalaya. My son was in class 10. So the mountains there are very bare, and in the dream, Guruji showed that the face of the mountain, the head of the mountain, face of the mountain was that of Guruji. अनंत रूप था वो, उसमें उन्होंने अपना अनंत रूप का दर्शन दिया था मुझे. So अनंत रूप में ही शोड चेहरा मेरे रब का था. उनके हाथ वर very long, very very long, and the body, rest of his body was never ending. आसमान से धरती में समाये हुए थे, मतलब जहां देखती तो वही थे. And his arms were like this, and he had nestled me, and he is the mountain behind me. He is the you know, he is my Lord God Almighty. He is everything for me. मेरे लिए जो कुछ है सब गुरुजी गुरुजी गुरुजी. And in that dream he showed there is a conversation that is happening, and he has nestled me like this in his arms. He's nestled me like this, and he's telling me, he says, Ritu auntie, this is the water you have to cross. I suppose when he showed me that, and the water that he meant was that these are the difficulties, these are the tasks, ये मेरे को अपने कर्म काटने हैं. This is what he meant. I understood as because this was quite a few years back, and this is what मैं जिस तरह साडी जर्नी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਚਲਦੀ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, सोचो that you know anything that he showed you had to, I mean, because हमारे को तो समझ ही नहीं ना आती कि क्या दिखाया उन्होंने. So he's telling me, Ritu auntie, this is the water you have to cross, and I'm looking up at him. उनका अनंत रूप है, उन्होंने अनंत रूप ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨੈਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ. एंड मैं उन्होंने दे चेहरे ते तरफ देख रही हूँ, उत्ते अपना इंज फेस ऊपर करके देख रही हूँ उन्होंने. ते मैं कह रही हूँ, गुरु जी आई एम सो स्मॉल, आई विल ड्राउन. ते मैनू कहंदे, गुरु जी बट आई एम विद यू थ्रू आउट योर लाइफ. दिस इज अ कॉन्वर्सेशन संगत जी that is happening between my Guru Malik and me. And मतलब इन्ना ता ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ आदमी सोचता है कि मतलब सोचने वास्ते कुछ रहा ही नहीं. एंड ही इज टेलिंग मी, रितु आंटी, आई एम विद यू थ्रू आउट योर लाइफ. इन्नी वड्डी गल है, इन्नी वड्डी चीज है, उन्हां दा सहारा नाल है, ओ नाल हैगे. इन्नी what a big thing he said to me, that he is with me throughout my life. And I'm looking up at him and telling him, Guruji, I'm so small, I'll drown. Oh, he's looking down at me like this because उनका अनंत रूप था. There was his from आसमान के तक तो उनका चेहरा था, वहां से एंड वहां इंज नेसल करके, एंड ही शोइंग मी, रितु आंटी, दिस इज द वाटर यू हैव टू क्रॉस. दैट वाज अ वेरी वीक पार्ट ऑफ माय लाइफ, वेरी टफ पार्ट ऑफ माय लाइफ. एंड सोचो रब ने आके उस वेले आके मैनू ही इज गिविंग मी अनंत रूप दा दर्शन दे के मैनू कह रहे ने, दिस इज द वाटर यू हैव टू क्रॉस. एंड आई एम टेलिंग हिम, लुकिंग अप एट हिम, एंड साडी गल हो रही है, एंड आई एम टेलिंग हिम that Guruji, but I am so small, I'll drown. He's looking down at me, Sangat ji, and he's saying, Ritu auntie,
No, he didn't say Ritu auntie. He said, but I am with you throughout your life. ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ there is and ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ ਸਾਥ ਹੈ ਨਾ। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्र 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 दात्या। So life with Guruji is so beautiful, and I never asked him then, and now also I know there is no need to ask, because if he is walking with me. Why should I say if he is walking with me? ते जिथे जानी है, and every pal, it is so amazing. Actually, I'll share a very small thing. Once, मतलब the way he has in my journey of life, the way he has ensured, taken care in every whatever way, and ਦਰਬਾਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ in 2000 and I think it was 11, I started having a lot of pain behind my knees, and I'm basically an athlete, so I couldn't walk on the treadmill also. I was wondering ki ho gaya mainu. And when I went to Bada Mandir, every Thursday I used to be going there, Monday, Thursdays, every day only I would be going. And ਉੱਥੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ I just looked at him, and ਸਿਜਦਾ करते वक्त भी ਮੈਨੂੰ ना बड़ी, and I would get a lot of pain behind my knees. I couldn't bow nicely, and I just looked at him, and I was wondering, I said, Guruji, ये क्यों हो गया वा, मैं सिजदा भी नहीं कर पा रही हूँ। That night संगत जी he gave me dream. उन्होंने मैनू विजिट किया, एंड उन्होंने दिखाया, एक तो मैं सी ਜਿਹੜੀ सो रही सी, एक फिर उन्होंने दिखाया कि गुरुजी वाज इंज पहाड़ी जी हैगी, पहाड़ी तो पिछों गुरुजी कम्स आउट, and then he shows one Ritu lying down, one Ritu standing, and one Ritu sleeping. And then he's telling me, and he's showing me, he didn't speak anything, he gave me a very big smile. His smile is so beautiful. And he's showing me the infection that was there behind my knees, and whatever was there in the body, it was full of infection. And Sangaji, this was on the 8th, I think, of November, if I remember correctly. And I wasn't able to, from that day itself, एक हर दिन मैनू या तो मंदिर बुला लेंदे सी सेवा वास्ते या लंगर वास्ते। एवरी डे मैनू कदे कोई ना कोई बुला लेंदा सी, सत्संग वास्ते, लंगर वास्ते, सेवा मिल जानी हर रोज। And पूरा November, December, I seem to be doing nothing excepting being with Guruji। किसे सत्संग दोपहर वेले भी, शाम वेले भी, रात वेले भी, it was a continuous flow of satsang. I would get lot of langar, I would get मतलब every meal of mine was only langar prasad. संगत जी, गुरुजी के लंगर प्रसाद में सब कुछ रखा है, your proteins, good carbs, fats, calcium, magnesium, vitamins, minerals, whatever the body needs, it is there in his langar prasad. So during that time, November, December, January, by January end, my complete physical body had started coming back to its, I started getting better and better and better. I didn't go to any doctor, Sangaji. Guruji is my doctor. Guruji was my doctor. Guruji is my doctor, and he is only taking care. And the way he would every langar prasad, and by March I was back, able to go and go back to my gymming. My speed had increased, where it had come down to 2 and 3 on the treadmill. I was already back at about 9 and 10. And I could do my inclines, I could do my exercise again. By March end, I was absolutely normal. Shukrana Guruji, Jai Guruji, Jai Guruji. Thank you Guruji for the health, wealth, happiness, for the sangat, for everything that you bestow upon us. And on each one of us, you take such good care of us, on each one of us. And kaise Guruji, I mean, it's amazing.
this is very recently there is a book reading club, and wherein I was very keen that मेरा बड़े से मन करता था, and that I should also get an opportunity to read a book. And I get this call from Shilpi auntie, and she said, you read the book The Alchemist, and ये गुरुजी ही कराते हैं. And that book The Alchemist that he made me read, it was every single day, it was as if he himself, because what he said ना कि हमेशा he used to say be positive, हर चीज में positive रहो. Then he had showed, he would talk about the flow of energy, and it was so beautiful that once ek chota sa I want to share. I think we still have a little time, so I just want to share. And in this book, it was beautifully, recently only we finished reading this book, The Alchemist. वो भी गुरुजी दी मेहर है, संगत दे विच ही पढ़ते सी अस्सी ते it was as if गुरुजी ही की ही टीचिंग्स थी, बट विद अ लिटिल बिट ऑफ फिक्शन. ते बहुत मतलब इन्ना सोना लर्निंग भी सी, टाइम पास भी सी, ते इंटरैक्शन भी सी, सारा कुछ. ते फ्लो ऑफ एनर्जी दा एक छोटा जिहा मैं सत्संग सुनानी है. पॉजिटिविटी कितना इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू इफ वी आर पॉजिटिव, it is easier. He's healing us, so we only be positive. And like कदे भी अपने अंदर किसी दे we each one of us has her his own connection with him. कदे भी ऐ ना सोचो कि ओदे ओ इस तरह है या ए इस तरह है. कदे भी किसी दी निंदा नहीं करनी, किसी दी. गुरुजी नेवर, उन्होंने तो कदे भी ही नेवर डिड एनी प्रवचन और एनी सच थिंग, नो. उनके जो गुरुजी के मंदिर में जो शब्द बजते हैं, उनके शब्द इतने सुंदर है, उसी में सबको आंसर मिलता है. आप बैठ करके जब आप अपने जस्ट क्लोज योर आईज एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द शब्द, वी गेट ऑल द answers to everything. And it was so beautifully. I just want to share a small satsang about flow of energy. So my friend Deepika Mahajan, she told me, she said, Ritu auntie, please come. There is a new sangat Benu, and we are doing Guruji satsang in our house. I want you to come help with the darbar, etc. And Kada Prasad. मैं क्या ठीक है. ते she had I went there for Guruji satsang, and it was beautiful. There was lot of new sangat there, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿਓ. ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਸੋ I was just going to each one and giving ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, and मतलब ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ डिस्ट्रीब्यूट कर रही सी. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ came back to our office. We have a small office by the name of Roots Realty. ਉੱਥੇ मैं जब वापस गई, I told my son, I said, I'm feeling very sleepy. He said, why are you so sleepy? कुछ काम ते किता नहीं तुसी, सारा दिन ते सिर्फ सत्संग करके ते तुसी आए हो. मतलब उन्होंने देखो की किया, कहंदा तुसी ते सिर्फ सत्संग करके आए हो. तो but I couldn't keep my eyes open. तो कहंदा तुसी you go home and have a power nap. I came home, Sangat ji, and reached home at about 4:15 in the evening, and I just hit the sack, and 2 मिनट विच मेरी अख लग गई, गाढ़ी नींद. एंड गुरुजी gave me beautiful dream, and he labeled that dream as flow of energy. संगत जी, गुरुजी ने बहुत सोहनी चीज दिखाई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. And in that dream he showed कि जद मैं, because I had asked him, sir गुरुजी मैनू की हो गया, and why am I so tired? And he showed that मैं जदों प्रसाद इंज वंड रही सी सारिਆਂ ਨੂੰ, there was an exchange of energy. So that's how then in that, when he labeled it as flow of energy, he called that dream. He said, Ritu auntie, this is because I asked him, my question was, why am I so tired? He said, flow of energy. ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡ ਰਹੀ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਘਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. that is why like ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ जद असी बड़ा मंदिर जाईदा है, मत्था टेकीदा है, शब्द सुनीदा है, when we come out we feel so energized. That is because he has blessed us with that extra
extra, that's why he said na 11 ज्योतियों की शक्ति है. And we have to keep ourselves very very positive. जिन्ना ਅਸੀਂ अपनी flow of energy एकदम positive रखिए, that much more we are going to be healthier. Because बिल्कुल भी negative ना अंदर नहीं होना चाहिए, एकदम positive. Then that will keep us with Guruji's meher, Guruji's grace. ਅਸੀਂ healthy रहांगे ते and nothing like health is so beautiful. And आपे गुरुजी ते आपे हर एक चीज वेखदे ने. ते I want to share one more very small satsang. ते गुरुजी हुण भी ना किन्नी वार इस तरह सुनीदा है. He comes संगत दे रूप विचों, संगत दे, because he is residing in each one of us. And ओते he makes his presence felt so beautifully. गुरुजी तो कहीं भी नहीं गए, गुरुजी तो यहीं है. और अब तो now after he has left his body, he is all over the world, everywhere. And it's amazing the संगत लाइना जेड़ी लग गई ने, बहुत ही लंबी लाइना. So it is एक छोटा या मैं होर हले हैगा थोड़ा जा टाइम. And once we were having every Shalini Khera auntie used to have Guruji Sangat in her house on a regular basis. So she used to call us there. थोड़े जे ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. And one day when I came out, Sangat ji, I saw, जिस तरह ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, and ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਐਸੇ ਅਟਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ I was just when we were sitting in the satsang, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਮੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਕੋਲੋਂ I got a call from there that I need to come and collect my file etc. ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ I was very happy and मैं बाहर आई तो I saw one, you can call him Sant, you can call him Mahapurush, but I have to describe that the Sant that I saw. He was about I had never seen. I've been to Amarnath also so many times with my husband also, because he used to fly helicopters there. So I've gone in choppers also to the cave, Guruji's cave there. And I saw this man outside, but ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤ. He was about I think 6'2", very tall, very well built man. He had पूरे इस तरह ना आसपास सांप लपेटे हुए थे. He had जिस तरह शिवजी जी ਦਾ रूप ਹੁੰਦਾ ना, he was exactly like that. And ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਟਾਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ. He was wearing he had trishul in his hand, he had mandal in his hand. मतलब मैं तो एकदम, and he just walked across the road and came to me. I was a little थोड़ा सा मैं मतलब थोड़ा सा हिल गई, थोड़ा सा डर गई, थोड़ा सा I was taken aback because इस तरह का दृश्य तो मैं कदे वेख्या ही नहीं सी. And he comes across to me and he says he just came very close to me and he's telling me he gave me a beautiful blessing, extraordinary blessing he gave me. That was for me. And I just looked at him. Sangat ji, I never realized that was मतलब in retrospection जब मैं बाद ਵਿੱਚ जिस तरह मेरा टाइम बीतता गया, मैं that as the journey went along, I realized that was, and this realization dawned that same night. I'll tell you why. Because मैं की किता उन्होंने मैंने बड़ी beautiful जी blessing दी थी, something extraordinary. And he said जहाँ मैं तेरी किस्मत बदल देती, he told me that. Okay. And so that man told me this. It never dawned. So many of these, so many ऐसे हम we meet and वो ऐसे बोलते हैं तो हमारे इतने समझ में नहीं आती है. We don't realize what is who's who. And I just took out something from my purse and I gave him. And I just took out only 100 rupees and handed it over to that man. And I mean, I'm being frank, Rab di dargah vich te kuch lukai da nahi. And मतलब like whatever, whether it is right or wrong, truth is truth. Guruji te कहंदे ने ते सच बोलो. And मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ. That night Guruji gave me darshan. And you know what he told me? He said, मैं
matlab because he had that me, I had given him that whatever little money I gave to that man, I gave it out of lalach. See how Guruji watches over us. It's a marvel. मतलब जितना शुक्र करो, and yes, the way he does things, the way he takes care of us. मतलब मैं तो I cannot, मेरी तो कोई ना औकात है ना कुछ, and मतलब फूलों की तरह रखते हैं, कहाँ से कहाँ ले जाते हैं. हम तो जितना शुक्र करे, थैंक यू करे, it is not sufficient, Sangat ji. And yes, Guruji can they see always be helpful to as many people as you can. And कदे किसी दा बुरा ना चाहो, कदे होर ते कुछ, मतलब गुरुजी ने सानू इन्ने प्यार नाल, yes, it is not nice, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, that we know, but गुरुजी really कभी, ये तो हम उनके शब्द कीर्तन से ही सुन लेते हैं and समझ लेते हैं. So it is ऐसे ना, मतलब गुरुजी जैसे बोलते हैं कि गुरुजी तो यही है. So at every instance he makes his presence felt. So that all that complete work of mine, whatever had been in the balance, in the pending, he ensured it was done. And I realized later that गुरुजी ने, वो गुरुजी का रूप था जो उन्होंने उस महापुरुष के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे. बिकॉज कभी मैंने ऐसा तो संत तो मैंने कभी ऐसा संत देखा ही नहीं मैंने. ही वॉज सो टॉल इन, मतलब, and he was literally like a replica of Lord Shiva, dressed like Lord Shiva, and in a very different style, not like the normal जो आप संत देखते हैं. And he had walked right across from outside Chalni Khera's house, पूरा across से ऐसे चल के आए थे मेरे पास. शुक्र गुरुजी, थैंक यू गुरुजी फॉर ब्लेसिंग मी. तो ऐसे ही ना, it is we never know कि किस रूप में किस वक्त वो हमें he makes his presence felt. Yes, at every instance, जितना हम उनको दिल से हर वक्त एहसास करें, उतना we are the ones who will gain. We are the ones who are totally taken care of. And मेरे तो like in my house, everything is, once he gave me such beautiful darshan. And again about 10-11 years back, and he told me in my drawing room near the dining table, he gave me darshan. And he told me, he said, Ritu auntie, the soldiers in this house are very strong. And as life unfolded, everything was sorted out. And everything is sorted out. And from my मेरे कार्य, even my daughter-in-law is also totally, completely chosen by him. And I was looking for an army services background girl, and he gave me this girl from near Punjab. And he had told me, in the dream he told me, when he showed me a huge shivling, and he said, Ritu auntie, ladki Punjab ki hai. And later on I got to know, I didn't even, she's from an agricultural background. But जिस तरह गुरु जी कहते घर सुख वसिया, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ. जब रब नाल है ते सब कुछ सानू, we don't need to think, and we enjoy the present. And yes, he always wants to see us smiling and happy. And if since he is a Rasak Vairagi Guru, he never told us that we are not to we are not to he wants us to dress well. By himself dressing well, that was what he was teaching us, to dress well, eat well, be good, be pure on the be beautiful on the outside and pure on the inside. To जिन्ना सी अपने आप ਨੂੰ pure रखिए उन्ना, that is best for us. I thank you so much. Thank you. I thank Bada Mandir for giving me this opportunity to Guruji da शुक्राना करन दा. And I really hope किसी ना किसी ਨੂੰ कोई भी मैसेज मिल के, कोई भी सारे because we always feel कि ज्यादा सी सत्संग सुनीदा है, ते we try to also sort out our own questions, issues, and even through the kirtans and through the satsangs,
we all get messages for ourselves, and I hope that Guruji forgive me if I have made any mistakes, and I hope it satsang also benefits at least someone, at least. Thank you so much, Guruji. Jai Guruji.